एंड स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल आल्सो गिव यू हिंट्स कि कैसे यूपीएससी में पीवाईक्यूज जो है यहाँ से आते हैं. तो प्लीज पे योर फुल अटेंशन विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री ऑप्शनल. ऑलराइट, सो इफ वी सी एनसीईआरटीज, ठीक है, एनसीईआरटीज का जो फोकस है वो थोड़ा सा आप होगा ना मैक्रो लेवल पे ज़्यादा रहता है, माइक्रो लेवल पे थोड़ा सा कम रहता है. अगर आप एनसीईआरटीज कभी भी पढ़ोगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी. बट वन थिंग विच इज़ इवन मोर इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि अगर हम सारी एनसीईआरटीज को, जैसे हमने पहले बात किया था, अगर 6-7 एनसीईआरटीज को मिक्स कर देते हैं, अच्छा खासा कंटेंट हमारे सामने हो जाता है. लाइक दिस आर अराउंड 170-180 स्लाइड्स जो मैंने कल बैठ के एडिट किया. तो दे आर गोइंग टू कवर एक्सटेंसिवली ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया. But firstly, we'll start with the first topic. The first topic is always about why are we even discussing about ancient India. ये टॉपिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई ठीक है, विच पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री डू यू लाइक द मोस्ट, देन 3 ही ऑप्शन आपके पास, एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न. एंड इफ यू विश टू गो फॉर द एंशिएंट इंडिया देन यू हैव टू राइट समथिंग, यू हैव टू टेल समथिंग अबाउट इट, राइट. सो इसका हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया. एंड व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट एंशिएंट इंडिया, which are the most fundamental questions that we have in front of us. Again, directly हमने NCERT से borrow किया. Like number 1, how, when and where people developed the earliest culture in our country. We see various cultures have developed, right? Paleolithic है, Mesolithic है, Neolithic है, then the division within that. Then how they started agriculture and how it made their life secure as well as settled. That's the second major question which we have in ancient history. Third, how these ancient India discovered and utilized various natural resources. We have large number of natural resources in India and how they were utilized from those time onward. Founding of cities, villages as well as large kingdoms. So सारी चीजें हमें समझनी है धीरे धीरे करके. यही देखो पर्सपेक्टिव है एंशिएंट इंडिया के बारे में. नेक्स्ट, how did they took farming, spinning, weaving, metal working, how they created the means for their livelihood. So whenever somebody asks you this question, why do we study एंशिएंट इंडिया, तो यू शुड नो अबाउट दीज बेसिक पॉइंटर्स. ये इंपॉर्टेंस है जब भी हम स्टडी करते हैं एंशिएंट इंडिया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री बिकॉज इफ यू सी द कवरेज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 million years ago and goes roughly around 750 AD. So if you see coverage wise, ancient India, this is roughly 99% of human history. And this human history, we do not recognize it that much. Why? Because जो हमारे पास sources हैं to understand this part of the history, they're always challenging. Why they are challenging in nature? अभी sources पे भी बात करेंगे. Like we majorly have 2 categories of sources. We have literary sources and the other we have is archaeological sources, right? So these archaeological sources do not provide the whole connected history, and that makes it difficult for us to understand each and everything about them. And the second major level problem comes is that how to understand these archaeology. Like if we see Harappan script is there, all of us know about it, but we cannot do anything about it because it is still undeciphered. मतलब सब कुछ जान के भी हम अनजान हैं. That is the situation with Harappan civilization. Today we'll take examples of Egyptian civilization, we'll take examples of various Mesopotamian civilization, even Chinese civilization, to make you understand कि इन civilization में कितना ज़्यादा connected है. But in case of India, the problem is because of that undecipherment of the script, we are not able to understand exactly how their political system, economic system, social and cultural systems were there during the Harappan times. But anyway, other than that, what we need to understand is this, that the importance of studying ancient Indian history depends upon these basic areas. Now, the second major part which may be asked to you is that what new things we are able to understand about India when we understand the ancient Indian history. Now, this is the approach of R.S. Sharma. I will introduce many historians also to you today itself. So, first thing which becomes easy to understand India, it is unity in diversity. You may have heard these terms because Indian form of nationalism, it is built on this one single India. है ना, ये सिंगल आइडिया है जिसके बेसिस पे हम लोग की आइडेंटिटी बिल्ड हुई है, that we are a diverse nation. India is a young nation, right? So this unity in diversity, how? Because of mixing of various races and tribes, large number of tribes, they have intermingled, and this is how our whole India is built. Second, cultural exchange. Like if we see the cultural exchange between North India and South India, East and West, and finally how even the Dravidian culture, it got mixed into the Vedic culture. There are lots of examples which we are going to see in the coming classes. आगे क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें समझेंगे. Third,
It's about the family of languages, various languages. Like largely हमारे पास 4 ही family of languages है. जो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में सबसे important, that is the Indo-Aryan group of family. In the south we have is the Dravidian, but there are other languages also which are important, right? Like Munda languages influenced Indo-Aryan vocabulary. Large number of terms are found in the Indo-Aryan languages. And finally, the rise of various religions of the world. अगर हम इंडिया की बात करें, India is an epicenter of large number of religions. Just like we see the area of Palestine. Palestine is a very important area. Why? Because it led to the rise of, yes, Judaism, it led to the rise of Christianity, it also led to the rise of Islam. Similarly, if we see India, here we see the rise of Hinduism, Buddhism, Jainism. So that's why religious epicenter is also there. So that's why it's unity in diversity. And these are the pointers which you need to remember, because कभी भी basic general conversation कभी भी करनी पड़े किसी के साथ ancient India के ऊपर, these points should be clear to you. All the enrolled students, हम आपके साथ में PPT share कर देंगे, तो आपको as such notes बनाने की जरूरत नहीं है. But somebody tells you that despite the diversity, okay, there was a sense of unity. And what is that? Number one unity that we have is geographical unity. If we see the map of India, okay, it has different subsection, but however there is an overall understanding of Indian subcontinent कि भाई हमें पूरा subcontinent है. So that is a geographical unity. Then common identity, different languages हैं, but at the same time we have a same territorial identity. Different names for India are there. Like if we see Aryavrat is there, Bharatvarsh is there, and Hindustan, the word Hindu, as all of us know, it is a corrupted form of the word Indus itself. Hindu is the word from where we see the beginning of the word Hindu, which was used by the Arabs. Then all of us, we were part of the major empires of the Ashokans, Samudragupta, and later on even the British, which is not a very courageous part of our history initial, but anyway, that we were also part of it. Then cultural unity, we have seen Ramayana, Mahabharata. If you go to different corners of India, you'll find different versions of Ramayana and Mahabharata. And Ramayana and Mahabharata is not just limited to Hinduism. We find its part even in Jainism. In Jainism, it is very important. Then lingua franca, as we have seen, initially it was Prakrit. Prakrit was a major language, and later on it was eventually became the Sanskrit. So there are lots of elements of unity which we see in India. Please remember them. Such basic things can even be utilized to in your part of essay writing. जब भी essay वगैरह लिखोगे, वहाँ पे कभी बात करना पड़े culture diversity, common elements. So these pointers can be utilized. Now there's one very important question which is asked in the interview board. जैसे कि हिस्ट्री पढ़ने का फायदा क्या है? हिस्ट्री इज अ डेड सब्जेक्ट, जो हो गया उसको छोड़ देते हैं, खत्म करते हैं कहानी. बट what are the importance of studying history itself? So first very important thing is understanding the current problems. Like we have large number of problems in India. जैसे अगर मेजरली हम बात करें, one of the major problem which we see in Indian society is caste system. So what is the genesis of caste system? कहाँ से शुरू हुआ, क्या reasons हैं, कैसे हम इसको in the future we can make sure that it does not affect a large significant amount of Indian population? How is that going to happen? So understanding the problems requires understanding of history. That is point number one. Second, within this we have a gender inequality. We have seen from the Vedic times, because the connected history of India, it starts from Vedic times. So from Vedic time till today, the problems which have eventually increased gender inequality in India, उनको हमें समझना है. Finally, the religious differences. If we see politics of India, even though we say that we are a very secular country, but still religion is utilized at the time of voting. अभी अगले 1-1.5 महीने में आपको पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी ना. This is how the Indian politics works. But anyway, if we want to get over these current problems, again we have to find our refuge in India's past, कि कैसे वहां से हम उसको समझें. Second, learn from successes and failures. There are lots of major challenges which we have seen in the previous times. Like if we see invasions, India में maximum invasion किस side से हुआ? The invasions came from the northwest. So that is a big failure of India in a strategic manner. So today our maximum attention किस तरफ जाती है? Northwest की तरफ जाती है. So we understand from our failures, right? We also understand from our success. If we see the policies of Ashoka, that this is how a patron should be, this is how a king should be, how they can look after their various subjects. So those success model, the model of Dhamma, very specifically saying that if you are criticizing others' religion, right, this is going to be counter for your own religion itself as well as the peaceful environment around you. That is something which is
considered as Indian model of secularism. We gave equal kind of patronage to different religions. तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी हिस्टोरिकल इवेंट्स को हमने रिकॉग्नाइज किया, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, एंड वी हैव लर्न फ्रॉम आवर ओन हिस्ट्री. एंड फाइनली, इवन मोर इम्पॉर्टेंट, look, in the future we have to learn to move forward. हम static नहीं रह सकते. We have to go past whatever wrongs have been done, they have been done. Like when we see politics of India, right, ये हर country में, it's not just about India, the politics is always like they हमेशा गड़े मुर्दे उठा के लेके आएंगे, right? So how can we move forward in such a society? That's why if you want to move forward by understanding the past, we can remove the outdated practices that hinder progress. Like एक सबसे बड़ा controversial अगर हम बात करें किसी भी person का, that is Aurangzeb. But when we try to understand Aurangzeb, what do we understand? That many of his acts, they were political in nature, and in those times there was very less segregation between the politics and the religion. But however, if we see it from today's lens, it will always look like it was only a religious act. So that's why if we need to move forward, we need to understand history as it is, and then only we can talk about the future. So whenever somebody asks you this question, why are we studying this? So ये इसके कुछ positives हैं which are going to help you. In UPSC, if you want to become a very good administrator, यही सारी चीजें तो हमें सीखनी होती हैं. If you go to any specific part of India, if you know the history of that area, you can understand the current challenges of that area. Second, you can also understand from the past success as well as failure of various kinds of policies of that area. And finally, once you understand all them, you can always look forward. So as an administrator also, these things are going to be very, very relevant for you. Now this is one part which is more like कि भाई चलो ठीक है एक बार discuss कर लेते हैं. Hi, a very good evening to all of you. I'm Vikas Elawat. I'm a former civil servant. I was able to crack UPSC twice. In fact, in 2018, I was able to get highest marks in history optional, and they were around 324. So this year I'm coming up with a series which I am calling Self Study History Optional. इस series में 100 से ज़्यादा वीडियो होने वाले हैं which are going to cover the different nuances of ancient, medieval, modern as well as world history. So those of you who are preparing for 2025, register करिए and try to get the maximum out of this specific initiative of ours. So at Prep Career IAS, we are producing results from last many years. 2023 में बहुत सारे टॉपर्स हमारे इंस्टीट्यूट से थे. 2022, 21 हर साल बहुत अच्छे टॉपर्स यहाँ से निकले हैं, and they have been able to get very good marks in history optional. So those of you who are thinking कि यार start करके कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, we already have achievements with us. I was able to achieve, my students are achieving, and you can be the next. इन सेशंस में क्या होने वाला है? नंबर 1, विल बी फोकसिंग ऑन फाउंडेशन ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्टोरिकल पीरियड, व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री, व्हाट इज प्री हिस्ट्री, बेसिक लेवल. ओके. सेकंड, अलाइनमेंट विद यूपीएससी सिलेबस. जितना भी हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है वो 51 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो वी आर गोइंग टू अलाइन ईच एंड एवरी कंसेप्ट विद द सिलेबस इटसेल्फ. नंबर 3, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग. ऑल ऑफ यू नो कि जो मेंस है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव लेवल पे होता है, और आप सब लोगों को आंसर राइटिंग सीखना शुरू करना पड़ेगा, है ना. वी डू नॉट हैव टू मच ऑफ टाइम, तो स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग शुरू करेंगे. एंड नंबर 4, द ओवरऑल पैकेज इज़ वेरी हॉलिस्टिक इन नेचर. तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो जो बेसिक लेवल फाउंडेशन हिस्ट्री ऑप्शनल की वो कंप्लीट हो जाएगी. यू आर गोइंग टू गेट मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स अलॉन्ग विद दिस. ओके. 100+ सेशन है, चारों पार्ट कवर होंगे. थीम वाइज सेग्रीगेटेड डायग्राम, फ्लो चार्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं. देखो अगर हम सारी एनसीईआरटी को कंबाइन कर दें, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ वेरियस बोर्ड्स ऑफ इंडिया, तो 25 से 26 एनसीईआरटी निकल के आती हैं. उन सबको हमने कोहेरेंट फॉर्म में डिज़ाइन किया है सो दैट यू कैन लर्न द बेस्ट फ्रॉम दैट. ओके. बिकॉज देखो हिस्ट्री में रिसर्चेस चलती रहती हैं. अभी तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज़ हैं, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू द रीसेंट हिस्ट्री देन द प्रीवियस हिस्ट्री जो कि आर एस शर्मा वगैरह, सतीश चंद्रा या फिर बिपिन चंद्रा ने लिखी हैं. दैट्स वाई वी आर कवरिंग ऑल द एनसीईआरटीज, एंड दैट्स वाई 100+ सेशंस हो जा रहे हैं टोटल मिला के. देन 30+ वैल्यू एडेड आपको डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं. डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशन मिलेंगे. जूम सेशंस भी करेंगे बाद में, ताकि आप लोगों की जितनी भी डाउट्स हों विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग दे कुड बी सॉल्व्ड. ओवरऑल जो है आपको क्लास की पीपीटीज मिलेंगी, कंसेप्ट लिस्ट मिलेगा, पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको अच्छे से हमने डिज़ाइन कर दिया ताकि आप सब उनको अच्छे से पढ़ सकें. माइंड मैप मिलेंगे पूरे सिलेबस के, वर्कबुक और लर्निंग असाइनमेंट्स मिलेंगे, एंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, सो दैट वंस यू लर्न समथिंग तो साथ में उसको एटलीस्ट इवेल्युएट भी करना चाहिए ना, कि भाई हमें कुछ समझ में आया भी है नहीं आया, एटलीस्ट जितना रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँचे हैं या फिर नहीं पहुँचे हैं. तो आपको करना क्या है?
व्हाट वी नीड टू डू दैट, सबसे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक गूगल शीट मिलेगा, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। देन एज ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड, हर किसी के पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक कॉल आएगा, एंड दैट इज समथिंग विच वी आर कॉलिंग एट स्क्रीनिंग प्रोसेस। बिकॉज अगर हमें आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच वी कैन हेल्प, दे आर ऑलवेज लिमिटेड इन नेचर। सो अकेडमिक काउंसलर इज गोइंग टू कॉल यू, दे गोइंग टू हेल्प यू और दे गोइंग टू अंडरस्टैंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, और यू मे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर सम टाइम एंड यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, तो इसलिए हमें स्क्रीनिंग प्रोसेस चाहिए होगा। एंड फाइनली ऑन द बेसिस of this, you're going to get the benefit of this program.